Hello students, welcome to the online study of Ashadip International School. Welcome you all once again in Standard 3, Subject English Grammar, Part 2. In English Grammar, we have already started lesson number 1, English Language. So Part 1 we have seen, and now we will move towards the Part 2. So let us start with Part 2, Unit number 1, English Language. So in English Language, the first part we have seen that how the words are formed, how the sentences are formed, and how that words and sentences combine and makes a language. So this is what we have done in Part 1. So now we will move to the Part 2. Now we'll see in this Part 2 parts of speech. Now the language, whatever language we speak, we require many things while speaking the language, right? So what are that things what we require to speak, that we will see in this parts of speech. जो parts of speech है उसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं कि जो भी लैंग्वेज आप बोलते हो इसमें कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती है, तो वो सारी जो है वो हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखेंगे. We will see this. First is noun, verb, pronoun, adjective, adverb, preposition, interjection, conjunction. So these are the parts of speech. We are using all those things while we speak. So we'll see in detail. Let us start with the very first. This is noun. So let's get started with the noun. N-O-U-N, noun. What are noun? So a noun is a person, place, animal or thing. You might have studied noun in your previous class also. तो noun क्या है? कोई भी person का, place का, animal और कोई भी चीज़, उसका एक जो नाम होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? noun बोलेंगे. We will see the example of it. Person, girl, boy, mom, dad, grandma, grandpa, Mrs. Jones. So जो भी नाम होते हैं persons के, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? Noun, person. Then comes the place, school, home, playground, zoo. जो भी places होती है, जैसे कि स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया, जू हो गया, होम हो गया, प्लेग्राउंड, तो ये जो places है वो भी क्या है? Noun. So place. Now it comes the animal. Animal जैसे dog, bees, frog, cow, lizard, जितनी भी animals हैं, insects हैं, that comes under this. So these are the animals. Now it comes the things, जैसे कि book, flower, shoe, pencil, जितनी भी चीज़ें आप आपके जो आसपास देखते हो, that comes under this thing. तो noun को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? A noun is a person, place, animal और thing. नाउन क्या है? कोई भी एक पर्सन का नाम, प्लेस का, एनिमल, थिंग, उनका जो एक नाम होता है. जैसे कि नाम ऑल्सो स्टार्ट्स विथ एन, सो हियर यू कैन कीप दिस इन योर माइंड, दिस नाउन स्टार्ट्स विथ एन. ठीक है, नाउन मीन्स नाम. किस किस का नाम होता है? पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. एज द पर्सन, दिस इज अ पर्सन, place, this is animal, and this is thing. So this is what the noun is all about. In the detail we will study in the noun chapter. This is just the idea that what the noun is. Now next parts of speech will move towards the pronoun. This is pronoun. The title of this is pronoun. See, as we can divide this in two parts, pro and noun. So it is related with the noun only. Noun के related ही है, तो pronouns क्या है? So the pronouns are words that replaces nouns. जो noun की place पे जो हम लोग use कर सकते हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे? pronoun बोलेंगे. क्या बोलेंगे? pronoun. noun की place पे, जैसे for example कोई girl का नाम है तो बार बार वो girl का नाम आपको ना लेना पड़े, तो आप उसकी place पे क्या use कर सकते हो? pronoun use कर सकते हो. जैसे for example she, you can use for the girl. These are some pronouns. It is given over here: I, me, she, we, they, who, that, yours, his, her, it, and etc. So here we will see this example. This is she or her is used for girl.
them और they, बहुत सारे persons होते हैं, उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे them और they. कोई भी चीज़ होती है तो उसके लिए हम लोग कौन सा pronoun यूज़ कर सकते हैं? it. We are using it for anything. We'll see more of it. I, when you are talking yourself, means आप अपने बारे में जो भी बात करते हो, so this is, you have to use this I as a pronoun. Next, he. When you talk about any boy, so you have to use pronoun he. You talk about any girl, कोई girl के बारे में आप बात करते हो, तो then you have to use pronoun she. Next, you. It means आपके सामने कोई person है, आप उसके बारे में बात कर रहे हो. It can be singular also and plural also. So that is you. The next is we. We means हम सब. इसमें आप भी हो और दूसरे भी हैं. जिसमें आप include हो तो उसे आप क्या बोलोगे? We. The next is they. When you are talking about someone, बहुत सारे लोगों के बारे में बात करते हो जिसमें आप शामिल नहीं हो, तो इसके लिए आप कौन सा pronoun यूज़ करोगे? They. So again we will see this pronoun. Pronouns are the words that replaces nouns. जो noun को replace करता है, noun की place पे हम लोग use कर सकते हैं. These are the examples of pronoun: I, me, she, we, they, who, that, yours, his, her, it, and etc. So these are the pronouns. This is used for I, he is used for boys, she is used for girls, you can be any person in front of you, we जिसमें आप भी शामिल हो, then you have to speak we, and then they means the persons you are talking about but you are not there in that group, so that at that time what you have to use the pronoun they. Next parts of speech is adjectives. This is adjective. It is nothing but, what are the adjective? Is a word which describes or gives more information about a noun or pronoun. Example, beautiful flower, big house. See, adjectives क्या होते हैं? Adjectives are the words, जो words noun या तो फिर pronoun के बारे में आपको ज़्यादा information दे. For example, take the example of simple example of pencil. आपके पास एक pencil है, so you can say that I have a big pencil or I have a small pencil. तो वो जो big और small जो आपने पेंसिल के लिए यूज़ किया है, सो वो क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया. एडजेक्टिव जो होता है वो हमें क्या देता है? नाउन या प्रोनाउन के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है. We will see more example of the adjectives. See, taste, sweet. जो आइसक्रीम होती है उसका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है? स्वीट होता है. Then color. The adjective can also be defined as color. This the orange color. This cat is having the orange color. The next, looks, pretty. You can say this girl is looking very pretty. This is a pretty girl. So this pretty is also the adjective. The next is size, tall. We are telling this giraffe is tall. So this tall is a adjective. Next we have behavior, funny, or very angry or the funny. This kind of behaviors what we have, this is also the adjectives. Next we have smells, yummy. Smells beautifully, smells, fragrance is such a good fragrance. तो जो smells होती है yummy, so this is also the adjective. The next is sounds. Sounds जो आते हैं, you have to say keep quiet, it is very noisy, बहुत ज़्यादा noisy है, बहुत ज़्यादा ये चुप है, बहुत ज़्यादा बोल रहा है. So ये जो सारे जो words है, it comes under the adjectives. The next is feels, soft or hard. ये बहुत ही सॉफ्ट है या बहुत ही हार्ड है, वो जो फील्स होता है दैट इज ऑल्सो दी एडजेक्टिव्स. एंड हाउ मेनी, कितने हैं, आप नंबर्स बताते हो, तो जो नंबर्स होते हैं वो भी क्या है? हमारे एडजेक्टिव्स है. आई हैव 5 पेंसिल्स, आई हैव 5 बुक्स, आई हैव 2 इरेजर्स. सो ये जो नंबर डिनोट्स करते हैं हम लोग, तो वो जो नंबर है वो भी क्या है? हमारे एडजेक्टिव्स है. सो विल सी दिस अगेन. इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स और गिव्स more information about a noun or pronoun. जो word हमें noun या pronoun के बारे में ज़्यादा information दे, वैसे जो words होते हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे? adjectives बोलेंगे. Then we'll move to the next parts of speech. This is verb. Now what are verb? Verb is a word that shows action.
आप जो भी एक्शन करते हो, वर्ब वी कैन ऑल्सो कॉल वर्ब एज एन एक्शन वर्ड। जो आप जो भी कुछ करते हो, जो भी एक्शन आप करते हो, उसे क्या बोलना है, हमें वर्ब बोलना है। क्या बोलेंगे हम लोग, वर्ब। सो दिस इज जंपिंग गर्ल, द बेबी स्लीप्स, अ मैन ईट्स अ बर्गर। आप बैठे हो, दिस इज टू सिट, टू स्टैंड, टू लिसन। राइट नाउ यू आर लिसनिंग टू मी, तो वो भी क्या है, एक वर्ब है। आई एम स्पीकिंग, सो दिस इज अ वर्ब। तो verb it means whatever we are doing, a doing word, and the action word, जो भी आप action करते हो, that is the verb. We'll see more example of it. This is run. This boy is running, so this run is a verb. Walk. Then we have write, play, ride, jump, read, and talk. So these are some examples of the verbs. You can also have more verbs. You can also think more of verbs, whatever you are doing till you get up in the morning, till you go to sleep. Right from to get up till you go to sleep, whatever you are doing, all these are called the verbs. जो भी आप करते हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, verbs बोलेंगे. We'll see this again. A verb is a word that shows action. जिससे हम लोग को एक्शन पता चलती है कि क्या एक्शन आप कर रहे हो. वो जो वर्ड्स होते हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ब्स बोलेंगे. Now we'll see the next part of speech. This is adverb. This is, as you can see, there are two words, ad and verb. So it is related with the verb itself. What is this? We will see. Adverb, a word that describes a verb and tells how, when and where. See, the turtle walked slowly. He went to beach today. My dog ran over there. सी एडवर्ब क्या है, जो हमें वर्ब के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है. जैसे कि एडजेक्टिव्स हम लोग ने देखा, एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो हमें नाउन के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं, और जो एडवर्ब होते हैं वो हमें क्या करते हैं, वर्ब के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हाउ यू वॉक. वॉक इज़ अ वर्ब. आप कैसे चलते हो, यू आर वॉकिंग स्लोली. तो स्लोली जो है वो क्या हो गया, एडवर्ब हो गया. कि वो जो वर्ब है आप किस तरीके से करते हो, कब करते हो, कैसे करते हो, कहाँ पे करते हो, तो वो जो सारी चीज़ें आपको बताता है जो वर्ड, वो वर्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, एडवर्ब बोलेंगे. वी विल सी मोर एग्जांपल्स ऑफ द एडवर्ब. दिस इज हैप्पीली, लाउडली, लेजीली, हंग्रीली, जेंटली, हैप्पीली, काइंडली and suddenly. So these are the examples of the adverb. Means आप जो भी करते हो वो किस तरीके से करते हो, how you are doing it, how, when, कब करते हो, कैसे करते हो, किस तरीके से करते हो, ये सारी चीज़ें जो वर्ड हमें बताता है वो वर्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, एडवर्ब बोलेंगे. We'll see this once again. Adverb, a word that describes a verb. जो वर्ब को डिस्क्राइब करता है. वर्ब हम लोग ये जो भी हम लोग वर्ब होता है, एक्शन वर्ड्स जो होते हैं वो हम लोग कैसे करते हैं, उसे जो डिस्क्राइब करता है जो वर्ड, वो वर्ड को हम लोग एडवर्ब बोलेंगे. एंड टेल्स हाउ, व्हेन एंड वेयर. मीन्स कैसे किया, कब किया और कहाँ पे. ये जो सारी चीज़ें हमें जो बताता है जो वर्ड, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एडवर्ब बोलेंगे. Now we'll move to the next part of speech. Preposition. This is the preposition. As we can split this, pre and position means जो आपको verb की या कोई भी चीज़ की position बताता है उसे हम लोग preposition बोलेंगे. We'll see this. A preposition is a word used to show the relationship of noun or pronoun to another word. जैसे कोई भी noun है तो उसका जो relation है means to the another word. For example, आप स्कूल पे आते हो, राइट, एंड यू कीप योर बैग ऑन द बेंच एंड बुक ऑन योर बेंच. टेक दिस एग्जाम्पल ऑफ बुक, वेर यू कीप योर बुक ऑन द बेंच. सो दिस ऑन जो है वो क्या है, preposition है, जो कि विच शोज द रिलेशन ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन टू द अदर वर्ड. जैसे कि आपने बुक कहाँ पे रखी है, तो यू आर कीपिंग द बुक ऑन द बेंच. तो जो ऑन जो वर्ड है वो क्या हो गया, आपका preposition हो गया. We'll see more example of it. This is on. This girl is on the ball.
दिस इज अबोव मीन्स उसके ऊपर, बिहाइंड पीछे, अंडर उसके नीचे, बिसाइड बाजू में, नियर उससे उसके पास उसके नज़दीक, दिस इज बिटवीन, बिटवीन मीन्स बीच में। तो ऐसे जो सारे जो वर्ड्स होते हैं जो हमें पोजीशन दिखाते हैं, तो वो जो वर्ड्स है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, preposition। क्या बोलेंगे, preposition। we will see once again, a preposition is a word used to show the relationship of noun or pronoun to another word, जैसे on, behind, above, under, beside, between, near, these all are the prepositions. We'll see the next part of speech. This is conjunctions. Conjunctions. What are conjunctions? See, conjunctions are words that join two sentences together. See, for example, I like cats and dogs. Conjunction means वो जो word होता है वो क्या करता है, दो sentences को या तो फिर दो word को joint करता है। जो word दो sentence या तो फिर दो word को joint करता है, वो जो word है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, conjunctions बोलेंगे। For example, I and my friend, तो वो and जो है वो conjunctions है। You can speak I have pencil and eraser, तो जो and हो गया वो क्या है, conjunctions है। जो conjunctions जो होते हैं वो दो words को join करते हैं। We will see more example of it. See, this is and, because, after, unless, but and when. These all are the conjunction. Conjunctions can be more of it. इससे भी ज़्यादा conjunction हो सकते हैं, depend on the sentence कि हम लोग कौन से sentence को हमें किस तरीके से बोलना है, तो उस तरीके से हम लोग वो conjunctions को वहाँ पे use कर सकते हैं। We will see this once again. Conjunctions are words that join two sentences or two words together. For example, I like cats and dogs. The next part of speech we have interjection. What are interjection? So interjections are words used to express some sudden feelings or emotion. जैसे sudden feelings आपको, see for example आप चलते चलते गिर गए, तो आपका जो एक्सप्रेशन है वो तुरंत क्या निकल जाता है, ओ आउच मुझे लग गया। सो वो जो सडन एक्सप्रेशंस जो होते हैं, सडन फीलिंग्स जो होती है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरजेक्शन बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस हुर्रे आई हैव पास द एग्ज़ाम, जैसे कि आप एग्ज़ाम पास हो गई है तो फिर आपको कोई कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज़ मिल गया, तो आप क्या बोलोगे, हुर्रे। सो दिस इज़ द, what is this? This is the sudden feelings or the emotions that comes out from you. So this is called the interjection. Wow, that's really great news. Then what your parents says, oh wow, great, it's really great news. So this is the sudden feelings or emotions जो होते हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे, interjection बोलेंगे। We will see some example of it. This is, oh wow, wait, ouch, hey, hooray, oh no, yippee. These all are the interjection that these words we are using to show the sudden feelings and emotions. So this is what the parts of speech is all about, as we have seen the noun, pronoun, verb, adverb, adjectives. Then we have seen preposition, interjections. All these things comes under the parts of speech. What you have to do, you have to revise all the things and try to implement all the things when you speak. Just go through the definition of all the parts of speech and see the example of it, and try to speak with the help of all these parts of speech. Thank you.